Welcome parents to one more webinar on YouTube channel of Arihant Academy. On behalf of Arihant Academy, I welcome you all in the interactive science career guidance webinar on careers in architecture. So students and respected parents जो भी आर्किटेक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं उन सब के लिए आज का वेबिनार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इस वेबिनार के अंदर हम कवर करने वाले हैं डिटेल्स लाइक विच आर द टॉप मोस्ट कॉलेजेस इन आर्किटेक्चर, उनके कट ऑफ्स क्या होते हैं, आपका 11-12 में आपका पाथवे क्या होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होना चाहिए, विच एंट्रेंस एग्जाम्स आर टू बी गिवन फॉर आर्किटेक्चर। ये सारी डिटेल्स आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये सब वेबिनार में हमें हमारे एक एक्सपर्ट भी ज्वाइन करेंगे जिनका इंट्रोडक्शन इस वेबिनार के अंदर ही मैं आपको दूंगा। सो आशा करता हूँ पेरेंट ये वेबिनार भी हमारे बाकी वेबिनार की तरह आप सबके लिए यूजफुल होगा। सो वंस अगेन वेलकम एंड होपिंग टू गिव यू the one of the best information possible. Let me introduce myself. I am Professor Jayesh Mamtora. I am the Chief Executive Officer of Arihant Academy. And आज मैं Arihant Academy के behalf पर आपको basic information about architecture stream के बारे में देने वाला हूँ. So hope you all will pay attention and listen to us very carefully. सबसे पहले आर्किटेक्ट ये मुझे ऐसा लगता है इट्स अ वेरी वेरी इनोवेटिव, वेरी वेरी थॉटफुल एंड वेरी प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ फील्ड एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। इनफैक्ट इंडिया में भी अगर मैं कहूँ कि मुंबई जहाँ पे स्पेस की काफी कमी होती है, अगर आज कोई भी बंदा अगर अपने घर में इंटीरियर कराने जा रहा है, पहले ऐसा होता था कि वो किसी एक लेबरर को बुला करके काम करवा देते, बट मुंबई में दिन ब दिन प्रॉपर्टी के रेट के चलते और प्रॉपर्टी की साइज छोटी होते होते नाउअडेज पीपल वांट द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस। वो अपने घर को बखूबी अच्छा तो दिखना ही चाहिए, प्लस हर एक कॉर्नर हर एक इंच घर का यूज होना चाहिए और उसे बहुत बखूबी निभा सकते हैं आर्किटेक्ट्स। इनफैक्ट दिस फील्ड nowadays of course boys तो उसको पसंद करते ही हैं, but girls are also liking this field and taking a great initiative and they are working really well and in fact they are professionally also doing very very well. So एक बहुत ही lucrative field है ये। What is the pathway to go for architecture? Yes, 3 साल से ये norms आ चुके हैं कि आर्किटेक्चर में अगर आपको जाना है तो कौन से रूट से जाना है। तो ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने 3 साल पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर किसी भी स्टूडेंट को आर्किटेक्ट का डिग्री परसीव करना है, बी आर्क जिसे कहा जाता है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, अगर वो उसे परसीव करना है तो उसे उसके 11th-12th में फिजिक्स एंड मैथ्स एज अ सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। मतलब ऑब्वियस ही बात हो गई कि आप आर्ट्स एंड कॉमर्स के थ्रू 3 साल से आर्किटेक्चर में नहीं जा सकते। उसके पहले ये रूल था कि आर्ट्स और कॉमर्स से भी लोग जाते थे, बट नाउ इट इज कंपलसरी। द ओनली रूट लेफ्ट इज वाया साइंस का रूट। तो यस, इट इज साइंस सब्जेक्ट जो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इन योर 11th एंड 12th। बट जो स्टूडेंट हमारे साथ 12th में है, बट जो कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी हमारे साथ 11 में जुड़े हैं, उनको बता दूं कि आपका पाथवे क्या होगा, आपका करियर पाथ क्या होगा, आपके एडमिशन प्रोसीजर्स क्या होंगे। सो इट्स वेरी सिंपल, आपको 11th-12th साइंस में करना है। बोर्ड में काफी अच्छे परसेंटेज लाने, काफी अच्छे कैसे, दैट विल कम व्हेन द सब्जेक्ट सिलेक्शन कम्स। बिकॉज जो आर्किटेक्चर के एडमिशंस होते हैं वो सिर्फ एंट्रेंस के स्कोर पे नहीं होते हैं। अभी तक आपने जितने वेबिनार सुने, जैसे कि 3 वेबिनार आपने सुने थे, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एनडीए एंड मर्चेंट नेवी, उनमें एडमिशंस वर सोनली ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस का स्कोर। ऑफ कोर्स एनडीए में बोर्ड्स में 60% लगता है, बाकी सब में 50% लगता है, वो भी पीसीएम में। बट आर्किटेक्चर एक ऐसा फील्ड है जहां पर उसे 12th बोर्ड का एग्रीगेट परसेंटेज देखा जाएगा। व्हेन आई से एग्रीगेट, इट मींस कि उसके लैंग्वेजेस, उसके बाइफोकल सब्जेक्ट्स या उसका आईटी, साइकोलॉजी, जो भी उसने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, सबको मिलाकर जो उसका आउट ऑफ 600 स्कोर आता है वो एग्रीगेट परसेंटेज काउंट होते हैं। सो फॉर आर्किटेक्ट स्टूडेंट it becomes very 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 much compulsory कि वो अपने 12th बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करे। नॉट ओनली 12th बोर्ड, आप चेक कर सकते हैं सेकेंड पॉइंट पे एंट्रेंस एग्जाम्स लिखे हैं। महाराष्ट्र में, या मैं इंडिया भी कह सकता हूँ, देयर आर 2 लेवल्स ऑफ आर्किटेक्चर एग्जाम्स कंडक्टेड। नाटा, जिसका की फुल फॉर्म है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर। किसी भी स्टेट लेवल, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपका नाटा का स्कोर और बोर्ड का स्कोर मिला के, जैसे नीचे लिखा हुआ है, आर्किटेक्ट के लिए आपको बोर्ड का स्कोर, मान लीजिए 600 मार्क का बोर्ड है, आपको उसमें 500 आया तो 500 का 50% यानी 250 लेकर एंड नाटा का एग्रीगेट का 50% लेकर कंबाइन करके आपको एक रैंक मिलेगा। मतलब मान लीजिए एक स्टूडेंट ने
नाटा एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया बट बोर्ड में उसका परसेंटेज नहीं है तो उसका रैंक पीछे जा सकता है। रिवर्स, एक स्टूडेंट ने बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेट्स से 90%, बट देन उसका आर्किटेक्ट नाटा का अच्छा स्कोर नहीं आया तो भी उसका स्कोर नीचे जाता है। तो इन स्टूडेंट्स के लिए परफॉर्मिंग इन बोथ द डिसिप्लिन्स, दैट इज 12th बोर्ड एंड नाटा एग्जाम, दैट इज एंट्रेंस एग्जाम, बिकम्स वेरी वेरी कंपल्सरी। एक कंफ्यूजन पेरेंट्स पूछते हैं कि सर व्हाट इज जेडब्ल्यू मेन। तो मैं बता दूं, जेडब्ल्यू मेंस के दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जेडब्ल्यू मेन पेपर 1 जो होता है दैट इज फॉर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, उनके सब्जेक्ट ऑफ कोर्स पीसीएम होते हैं। यहाँ पर जो जेडब्ल्यू मेन पेपर 2 होता है दैट इज फॉर द आर्किटेक्ट्स। ये किसको देना है? अगर आप ये क्रैक करते हो तो आप एनआईटीज, हमारे इंडिया में जो 31 एनआईटीज हैं उनमें से कुछ सिलेक्टेड एनआईटीज में आर्किटेक्चर है, उसके लिए ये जेडब्ल्यू मेन पेपर 2 का स्कोर देखा जाएगा। या कुछ गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जिसे कहा जाता है GFTI, या कुछ आईआईटीज हैं जहां पर आर्किटेक्ट का डिग्री मिलता है ऑफ कोर्स, तो वहां पर अगर जाना है तो इट इज मैंडेटरी टू क्रैक और टू गो आया जेडब्ल्यू मेन पेपर 2। बट अदरवाइज द मोस्ट कॉमन रूट पीपल प्रिफर इज द नाटा का स्कोर, बिकॉज महाराष्ट्र में जितनी कॉलेजेस हैं उतनी शायद एनआईटीज में सीट नहीं होंगे, तो ज्यादा वॉल्यूम जो है वो स्टेट लेवल पर जाता है। सो ये दोनों एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हो एंड आपके बोर्ड और एंट्रेंस को मिलाकर जो आपको रैंक मिलेगा उस रैंक के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। If I talk about year 2019 boards, now this is a year I especially would like to mention because I think Rohit sir also will agree कि दिल्ली में जो एक बॉडी बैठती है जो ये सर्कुलर्स बनाती है, आप बिलीव नहीं करेंगे, आई गेस कुछ 8 या 9 फरवरी 2019 को एक सर्कुलर आता है, जबकि बोर्ड का एग्जाम होता है 20 फरवरी, मतलब उसके 15 दिन पहले एक सर्कुलर आया जिसपे क्लियरली लिखा था कि आपका एग्रीगेट तो देखा ही जाएगा बट अब कंपल्सरीली पीसीएम में आपको 50% होना कंपल्सरी है इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल फॉर द फॉर्म फिलिंग। मैं रिपीट करता हूं, एचएससी बोर्ड में मिनिमम 50% और पीसीएम में इंडिविजुअली 50%। एग्जाम्पल, लेट्स से माय स्कोर इज 75% बट मेरा पीसीएम इज लेट्स से 48%, तीनों को मिलाकर 48, यानी कि 150 में से, मानो 48 भी क्यों, 148, 150 में से मैं बता रहा हूँ 300 मार्क का आपका पीसीएम होता है, 100 100 100 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। वो 300 में से अगर आप 150 नहीं ला रहे हो या उससे एक मार्क भी कम ला रहे हो, यू आर नॉट एलिजिबल। आपको 150 के ऊपर लाना है, भले आपका एग्रीगेट कितना भी अच्छा हो। दिस इज द सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को भी आ गया है। और ये सर्कुलर लास्ट ईयर इतना लेट आया था कि कुछ स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम के बाद मिला था एंड दे वर स्टक समवेयर, कि उनको पता ही नहीं चला कि ये सर्कुलर आ चुका है। सो आई वांट टू मेक अ वेरी स्पेशल नोटिस ऑन टू दिस कि नाउ इट इज कंपल्सरी कि आपको पीसीएम में इंडिपेंडेंट 300 में से मिनिमम 150 लाना है। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑफ कोर्स एग्रीगेट जब आपका 90 के ऊपर होगा, इट इज अंडरस्टूड कि पीसीएम 50 के ऊपर होगा, बट ये रूल है। लास्ट ईयर एक दो केसेस हुए जहां पे कुछ स्टूडेंट्स अच्छे परसेंटेज के बावजूद भी फॉर्म ही नहीं भर पाए क्योंकि उनका पीसीएम का स्कोर 148 था, दे वर नॉट एलिजिबल। द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 150 out of 300 in the HSC board not to take the admission to become eligible to fill the form. I hope I'm making this point वेरी वेरी क्लियर। तो इस बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि आप 11th-12th में अगर बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो बोर्ड में अच्छा तब परफॉर्म होगा जब आप मिनिमम से मिनिमम थियोरेटिकल सब्जेक्ट लो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट लो। यस, आप करेक्ट समझ रहे हैं, मैं बाइफोकल की बात कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट जो 11th के मेरे एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो आर्किटेक्ट में जाना चाहते हैं, बता दूं बेटा, प्लीज डू नॉट बी वेरी पॉजिटिव अबाउट वन बाइफोकल। आपको बाइफोकल मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन विच बाइफोकल। हमने कुछ केसेस में देखा है कि कुछ एरिया में ना कंप्यूटर साइंस बहुत ज्यादा होता है और वो स्टूडेंट बोलते हैं नहीं नहीं मुझे ना अगर ईएम मिलेगा तो ही मैं लूंगा, मैं कंप्यूटर साइंस नहीं लूंगा। तो लेट मी टेल यू, गेटिंग द बाइफोकल सीट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन विच बाइफोकल। कौन सा बाइफोकल मायने नहीं रखेगा। व्हाट द एडवांटेज ऑफ बाइफोकल, ये हमने आपको रोज कहा है। एक और रिविजन, आपका 600 मार्क का जो बोर्ड होता है, 600 मार्क्स का जो आपका बोर्ड होता है, उसमें आइडियली आपको लेने होते हैं 6 सब्जेक्ट, 4 कंपलसरी और 2 ऑप्शनल। पर जब आप बाइफोकल लेते हैं तो आपको लेने पड़ते हैं 5 सब्जेक्ट, 4 कंपलसरी और एक ही ऑप्शनल, और वो ऑप्शनल होता है आपका बाइफोकल। हमारे पास ये 4 बाइफोकल कहने के लिए मुंबई में अवेलेबल है या मुंबई के आजू बाजू वाले रीजन में कहने के लिए। आपको मैक्सिमम कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस मिलेगा, which is the C++ Java languages जिसको पसंद है, those student can go for this.
इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ कॉलेजेस में मिलेगा, स्टूडेंट थोड़ा कम पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ द डेप्थ ऑफ द ये तीनों में ईएम में अगर ऐड कर दूं तो सबसे बड़ा टेक्स्ट बुक इलेक्ट्रॉनिक्स का है. सो द फर्स्ट चॉइस इज कंप्यूटर साइंस, द सेकंड चॉइस इज ईएम. हाँ, अगर किसी को ईएम पसंद है तो वो भी ले सकता है, बट द थर्ड चॉइस इज इलेक्ट्रॉनिक्स. स्कूटर एंड ऑटोमोबाइल एज अ चॉइस भी नहीं मिलेगा क्योंकि एक आध कोई कॉलेज सैंटा क्रूज में है, अदरवाइज देयर इज नो कॉलेज इन नियर विसिनिटी फॉर स्कूटर एंड ऑटोमोबाइल. व्हाट द एडवांटेज? 4 सब्जेक्ट का 100 मार्क, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज कंपलसरी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 100 मार्क्स कंपलसरी, 400 मार्क हो गया, और बायफोकल के 200 मार्क. उन 200 मार्क में से 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल. ईएम मिला तो और फायदा, जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हो कि एक स्टूडेंट जो बायफोकल लेता है वो पूरे 2 साल तक सिर्फ 5 सब्जेक्ट की स्टडी करता है. अच्छा, कल के वेबिनार में भी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि 11 में मेरे पास बायफोकल नहीं था तो 12th में मिलेगा क्या, तो आंसर इज नो. आपको 11 से ही बायफोकल लेना पड़ता है. सो प्लीज सी टू इट दैट जब आप कॉलेज सिलेक्ट करें तो आप बायफोकल लें. डोंट बी वेरी चूजी अबाउट बायफोकल, गेट द बायफोकल सीट. एग्जाम्पल, एक कॉलेज में अगर 1000 सीट्स हैं तो बायफोकल के वहां पे सिर्फ 200 सीट्स होंगी. तो अगर आप चूजी हो गए तो वो 200 भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, और फिर 6 सब्जेक्ट स्टडी करना पड़ेगा. उसमें आपका सेकेंड लैंग्वेज और बायोलॉजी आ जाएगा, विच इज नोवेयर हेल्पफुल. सीएस में फिर भी स्कोर करना इज मच इजियर देन सेकेंड लैंग्वेज एंड देन द बायोलॉजी. सो इट इज मच मच एडवाइजेबल, गो फॉर बायफोकल. मिला अपना सिलेक्शन का तो वेरी गुड, नहीं मिले तो नहीं लेना, ऐसा प्लीज मत करना. सिक्योर और एडमिशन फॉर द बायफोकल. सो द एडवांटेज और व्हाट आर द एडवांटेजेस? एक बायफोकल वाला स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट पढ़ेगा, आप देख सकते हैं राइट में. एक जनरल वाला स्टूडेंट 6 सब्जेक्ट पढ़ेगा. यहाँ पर आउट ऑफ 600 ऑफ बोर्ड्स 200 से 220 मार्क का उसको प्रैक्टिकल आएगा. हाउ 200? एग्जाम्पल अगर आप गिनेंगे तो इंग्लिश में 20 मार्क, मैथ्स में 20 मार्क, फिजिक्स में 30, केमिस्ट्री में 30, तो ये हो गया आपके 100, और आपका बाइफोकल का 100. 200 मार्क्स आउट ऑफ 600 अगर प्रैक्टिकल है तो परसेंटेज वाइज इट इज 33.33% आर द प्रैक्टिकल्स. तो इट इज यस वेरी मच एडवाइजेबल कि यू मस्ट गो फॉर द बाइफोकल, क्योंकि प्रैक्टिकल में ही आपको ज्यादा स्कोर, और ये प्रैक्टिकल आपके कॉलेजेस अपने रिस्पेक्टिव लैब्स में करती हैं, तो दे विल नॉट आउट ऑफ द वे बट दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट and they try to give you good score, in fact many a times full score also, so you have to be very careful. But if you go for normal or general science, practical weightage is only 25%, that is 150 marks. So theory subject ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे, scoring can become little bit tough. अगर आपके पास बाइफोकल सब्जेक्ट 5 ही सब्जेक्ट पढ़े तो ऑब्वियस सी बात है यू हैव मोर टाइम. व्हाट डू आई मीन बाय मोर टाइम? क्योंकि आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स ज्यादातर अपने नाटक के क्लास में भी 3D ड्राइंग में थोड़ा सा ज्यादा समय देना पसंद करते हैं, प्लस अपने पीसीएम में वो ज्यादा समय देना पसंद करते हैं. एक्सपर्ट आके आपको बताएंगे. तो वो समय कब अवेलेबल होगा आपके पास? जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करेक्ट करोगे. अगर 6 सब्जेक्ट ले लिए, ड्राई ले लिए, तो अनवांटेड सब्जेक्ट भी आपका समय ले सकते हैं. So it is better to go for bifocal. So the first thumb rule for any architect aspirant we will suggest, please try to opt your bifocal. जो 12th में है वो लोग bifocal का advantage लें और अपना ज्यादा से ज्यादा समय theory के preparation में डालें. Now which textbook to follow? Of course कौन से textbook follow करने हैं, क्योंकि 2 textbooks available हैं. आप जो आर्किटेक्ट में जाता है उन्हें हम प्लेन साइंस के स्टूडेंट्स कहते हैं, और इन प्लेन साइंस स्टूडेंट्स के लिए एचएससी बोर्ड में कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कैसे लिखना है, 2 मार्क का क्वेश्चन क्या है, 3 मार्क का क्वेश्चन क्या है. सो दे हैव टू रिस्ट्रिक्ट देमसेल्फ फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, not NCERT. NCERT is more for them. These are the pictures of course of the old government textbook. नए वाले का cover page उन्होंने change किया है, but these are the government textbook which students are supposed to follow. Along with that, of course, the students sometimes those who are not able to make their own answers, they may refer to the textbook solution, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था. We are going to provide you the textbook solution as soon as possible. But yes, गलती से भी आपको एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो एडवांटेज डेफिनेटली होगा, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. मतलब कोई को बोलता है सर मुझे ज्यादा पढ़ना है, अब ज्यादा पढ़ने के चक्कर में एनसीईआरटी उठाया और अपना जो मेन पढ़ने का पार्ट था उसको छोड़ के एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, तो फायदा नहीं होगा. यू हैव टू स्टिक टू गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स. आपका पूरा ट्रेनिंग गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से होना चाहिए. नॉट ओनली दैट, क्योंकि आपको बोर्ड में परफॉर्म करना है, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न भी कुछ उस तरह से होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं, स्टेप्स के मार्क्स हैं, कैलकुलेशन के मार्क्स हैं, लॉग कैलकुलेशन के मार्क्स हैं. सो यू हैव टू बी ट्रेन्ड अकॉर्डिंगली. इनफैक्ट आपको राइटिंग का प्रैक्टिस ज्यादा होना चाहिए. इफ आई टॉक अबाउट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन पैटर्न,
अगर आप बहुत गौर फरमाओगे, 200 मार्क का ये नाटा का टेस्ट होता है। नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर इज अ फुल फॉर्म ऑफ नाटा। 2 पार्ट में ये एग्जाम होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आपका पहला जो पेपर होता है ऑफ कोर्स ऑफलाइन, इट इज द ड्राइंग, और ये आपका मेजर। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट डाउट पूछते हैं, एक्सपर्ट भी आपको बोलेंगे, कभी कभी स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरा ड्राइंग खराब है तो मैं आर्किटेक्चर में जा सकता हूँ क्या? तो लेट मी टेल यू, यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल ड्राइंग भी होती है। आप जो ड्राइंग दे रहे हो फ्री हैंड ड्राइंग की बात कर रहे हो, टेक्निकल ड्राइंग होती है, तो यू विल बी एबल टू डेफिनेटली कोप अप। सो डोंट वरी, अगर आपका ड्राइंग इतना अच्छा नहीं भी है तो यू विल बी डेफिनेटली एबल टू मैनेज दैट। ये ड्राइंग का जो पेपर होता है उसमें 35 मार्क के 2 क्वेश्चन यानी 70 मार्क, और 55 मार्क का एक क्वेश्चन यानी कि 55 मार्क्स। 125 आउट ऑफ 200। आप देख सकते हो कितना वेटेज सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग को है। इसी में स्टूडेंट का ज्यादा समय, ज्यादा प्रैक्टिस जाती है। नॉट ओनली दैट, इस साल से यानी कि अभी 2020 से पहले सिर्फ मैथ्स के एमसीक्यू आते थे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस साल से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के एमसीक्यू आएंगे, बट दोज एमसीक्यूज आर वेरी मॉडरेट भी नहीं, वेरी काइंड ऑफ फेंट लेवल के, एकदम टेक्स्ट बुक लेवल के जो एमसीक्यूज होते हैं वो एमसीक्यूज आते हैं। एंड द वेटेज तीनों सब्जेक्ट मिलाकर सिर्फ 15 एमसीक्यू आएंगे। एक एमसीक्यू का वेटेज 1.5 मार्क होगा, यानी कि मैक्सिमम स्कोर जो आपको पीसीएम के एमसीक्यूज दे सकते हैं, इट्स ओनली 22.5, बट इट इज देयर एज अ पार्ट। यस, इट इज देयर। बाकी होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड जीए एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसके ऊपर 35 क्वेश्चंस आते हैं विद 1.5 मार्क्स ईच, यानी कि 52.5 मार्क्स का आपका जीके या जीए एंड लॉजिकल रीजनिंग होता है। ऐसे मिलाकर 200 में से आपको स्कोर मिलता है इन नाटा। क्या कट ऑफ पे क्या मिलेगा, विल डिस्कस विद द एक्सपर्ट। दिस इज व्हाट द पेपर पैटर्न ऑफ नाटा एग्जामिनेशन। आई होप जो मैंने आपको बताया दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। मैं रिपीट करता हूँ। स्टेप नंबर 1, यू हैव टू ऑप्ट फॉर bifocal science, more and more writing practice. You have to stick to the government textbook, and you have to give more and more time for your drawing as far as the entrance preparation is concerned. But at the same time, you cannot ignore securing less percentage in the HSC aggregate, otherwise आपका एडमिशन में वो भी काउंट होने वाला, तो यू कैन नॉट इग्नोर। इंजीनियरिंग वालों को डर नहीं, उनको पीसीएम में 50 आ गया ना, फिर 51 आया 95, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एडमिशन सिर्फ जेई और सीईटी के स्कोर पे होता है। सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस। नाउ to do the further proceedings, I don't think so I'm a correct person, because मेरे पास कुछ पढ़ा पढ़ाया नॉलेज है। मैं बाय डिग्री, बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट नहीं हूँ। तो अगर आर्किटेक्चर के बारे में बात करना हो, तो कौन बेटर पर्सन हो सकता है देन द वन हु हिमसेल्फ इज एन आर्किटेक्ट, and he is there in the stream, in the teaching of architecture from last more than 10 years. उनकी अपनी एक इंस्टीट्यूट है। मिस्टर रोहित गोजिया आज आके हमें गाइड करेंगे, जो एक प्रोफेशनल एंड एक पैशनेट आर्किटेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग टीचर, उनका अपना एक पैशन है, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे खुद जाकर साइट पे जाके काम करते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उनके पास सिर्फ थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज टिल डेट, आज तक क्या नया अपडेट आया है, ये उनके नॉलेज के अंदर अपने आप इनकॉर्पोरेट हो जाता है। He is fond of interior designing, architecture, and providing the various guidance to the all architect aspirant. He's running his own brand. Mr. Rohit Gojia will come and guide us. Rohit sir, it is all yours now. Thank you and welcome, and thanks for giving time, sir. Thank you, Jay sir. Thank you so much for introducing me. Hi, one and all. As I was being introduced by Jay sir, my name is Architect Rohit Gojia. I did my architecture from Bhausab Hire College, that's in Bandra, and then I did my specialization with interior designing. Now I'm here to introduce more about architecture. As we all know, architecture is one of the noble profession. As in noble profession, we have 4, that is doctor, lawyer, CA, and architecture. So this is one of the 4 noble professions. I'll say briefly about architecture. It is a combination of a civil engineer, an interior designer, and a lawyer. So basically you get a thorough knowledge about your interiors, you get a thorough knowledge about the beautification of a building, the planning of the building, the elevation of the building, and you get a proper and legal way of how to practice a building, how to design a building, what are the rules and regulations which has to be followed. There are different rules and regulations. What it differs from state to state. This is how we go all about architecture. So can we have the next slide, please?
Coming to this, as we all can see, there's something written down below architecture that is called that is architecture written in a programming language. Now, why I'm introducing this thing, because now due to this COVID and Corona, we are moving more towards the digitalization of each and every streams. The same way, even architecture and interiors can be practiced very well with with the help of digital tools. We have a lot of softwares which can be which are helping us today right now, where we are sitting home, we are practicing our designing career, and they are AutoCAD, they are 3D Max. I'll explain you later about all these softwares. Moreover, talking more how a student or what kind of what do you say, hobbies should a student pursue for getting into architecture. I'll say with the next slide now. For example, if you are more into a creative thought process, for example, there are two types of mind trained. One is more over practical, one is theoretical things. If you are moreover a practical guy or a practical girl who works to be creative, more of sketches or do some creative stuff, then this is the right thing what you should follow. um, Coming to designing part, you never ever get bored, because every now and then, or where even if you're roaming anywhere, you get to see things or you observe something where you can really you can take that inspiration to inculcate with your designing, or maybe your planning process or your designing process. It can be colors, it can be small things like insects also. So this is all small things what really make you inspire day by day, and you never ever go with, you never get bored with all this stuff. uh, Third part is specialization. As I earlier also said, architecture is a combination of three things, that is civil engineer, then interior designing, and that is binoms. So these are the three parts where you actually get specialized into. These are the three streams which are necessary to understand when you come into architecture, because the design, whatever you design has to sustain for next 60 years. So this is where the civil engineer kind that thought process comes into the architecture part. Second is interior part. You or me, we are never going to buy a complete building, so you are supposed to consider each and every minimalistic possibility of an interior part of that particular structure. So this is where an interior designer comes into a picture. Coming into binoms, we have different rules and regulations. For example, coming into picture for a city like Mumbai, which is already overcrowded. Whenever we design a structure, we have to consider a lot of stuff. For example, you must have noticed with your same building, you should have some moving space in and around your building or your vicinity, where ambulance can move in and around, fire brigade can in and around. So this is how rules and regulations are necessary. So this is how you can specialize into these three things with architecture. Um Coming to, there are different streams, but then coming to architecture, whatever you design today, you can see that being concreted in next 4 to 5 years, and that can sustain for next 60 to 70 years. So this is where you have something which is, your thought process going into concretes now. So this is one stream where you see your paperwork or your sketch or your thought process actually getting built on land actually. So this is how architecture helps you. Coming into, when you enter with architecture, there are a lot of people with whom you have to interact. For example, civil, he's the third person who will actually make the measurement of the boning of your structure, that is your beams, columns and all. Then the same thing goes to the RCC consultant. He's the one who actually take care of what is the amount of steel which can be used, or what kind of concrete to be used to that structure. This is how all professionals and all expertise you have to be in and around with. So this is where how architecture is helping you in this 5 years. What is the right time to start architecture? I can say 11th is a good time where you can start architecture, but then nothing to worry much. Even if you are in 12th right now, you can start. It is not too, never too late. We have specially designed batches, or what do you say, study material, where even 12 students can join, and even 11 students can join. But then I still prefer, if you are in 11th, you should start practicing your nata
and rightly said JW means paper 2. These are the two exams what you have to clear before getting into architecture. So 11th is the best time where you can start off with. Normally, as Jayesh sir has already introduced the number of subjects what you have to take during your 11th and 12th. That is your bifocal, PCM, physics, chemistry, mathematics, your English subject, and then any of your elective subjects. And with this preparation, NATA and JEE means will be taken care during your weekends. So, parallelly, they'll be working together. There is a small part with NATA and JEE means also where PCM has to be considered. In totality, somewhere 22 to 25 marks are also dependent with your PCM marks also. NATA paper is divided into three parts. One is the drawing part, one is aptitude part, and the third is PCM, that is your physics, chemistry, and mathematics part. So once again, I'll say 11th is a good and the best time where you can start with practicing your NATA and JEE means. And if you have not started yet, then 12th also we can start off. We have more combinations coming up for 12 students also. So can we have the next slide now? Next slide, one more. Okay. Still, the same way as I have already discussed with the, previously also, if you are really thinking of getting into architecture, designing plays a very important role. Coming to, even Jay sir said this rightly. A lot of materials will be in and around with you. You have to keep yourself updated with the new upcoming materials, new upcoming designs, new upcoming patterns, or maybe structures also, because whatever you design today or you plan today will be concreted in next coming 5 years. So you have to be, your thought process, your creative thoughts, or your guidelines with material has to be advanced of at least 5 years. So this is how about what you have to really take care of. Can we have the next slide, sir? Coming to NATA and JEE means paper 2, these are some of the examples what I can give. Drawing is furtherly divided into three parts, that is 2D, that is two-dimensional drawing. The topic what you see here is, it was asked to design a logo or a banner of a hospital. So this is how it looks all about. Can we have the next one? This is one more, there is one more example for a 2D. Yeah, now this is a logo for a Mumbai University, this thing. So this is how 2D, that is two-dimensional. Here you have to complete that particular topic with your color combinations. So this is how you learn about colors and all. Can we have the next slide, sir? Now this is 3D, that is three-dimensional figures. These topics can be solved in various ways, that is isometric, oblique view. But then this has been done with ISO, that is 90-30-30. Here is in, you have this topic will help you out with your sketching progress, your sciography concepts, your perspectives, your combinations, how materials and when to be used. So this is all about 3D. We have one more example of 3D again. Jason, can we have the next slide? Yeah, this is again the same thing, the proportions. If you see the headphones, you see the CDs, you see the wires, you see what do you say, a mouse kind of thing. This is how a combination should look. If you see the detailing of that CD also, it has a proper thickness, the circular part, the earphones, the USB part, each and everything. This is how you provide the detail to that particular drawing. The next topic is all about memory. So can we have the next slide? So this is the third type and the most important one, which has to be followed with NATA, JW means, and in your entire career of architecture and interior designing. This is all about this particular drawing is focusing on one thing that is called one point perspective. The entire drawing is coming out from one particular point, and this is how we say that one point perspective. Such drawings can be done also with 2 point perspective, but then it has a completely different angle to this particular location. You'll be given a situation. For example, this is a situation where you are sitting in a food court with your friend and sketch what you see. There may be one more topic. We have one more topic, such as, like, imagine your height is reduced to 6 centimeter and you're kept in a lady's purse, and sketch what you see. So now here you have to actually assume, for example, if your height is 6 centimeter and you see your mobile phone, that will be almost 6 times huger than your particular size. So this is how memory is important to your NATA and JW mains exam. There's one more example for drawing, for memory drawing also. Now here, imagine yourself, imagine yourself in a jail, and you are standing in a queue where the prisoners are serving.
food. So this is how you have to you have to see where you see yourself when you are standing in a particular queue. You see the surrounding, you see a jailer, you see a policeman, you see a person who is serving food. There is a uniform to all the what do you say, the prisoners. There's one particular pattern of their windows, there's one particular pattern of their doors, one particular pattern of their ceiling. This is how the surrounding actually looks after. You'll see small details about the sciography also with the when a person is standing, there's a source of light coming from the window. So the sciography, or what we say as a shadow coming out, this is all what you have to really think about when you sketch about drawing. So this is the third and the last part of drawing. So in total, again, I'll repeat, NATA is divided into three major parts. One is drawing, aptitude, and PCM, physics, chemistry, and mathematics. Drawing has further three divisions, that is two-dimensional figures, three-dimensional figures, and memory part. These are the three different drawings what we'll be taking care of. So can we have the next slide now? Yeah, coming to the architecture colleges, I'll say there are a lot of colleges in India, but then I personally suggest students getting into Mumbai colleges, because after your 12th and after your NATA, there won't be any tutorials or coaching classes during your architecture practices. Coming to Mumbai, we have more than 16 to 17 colleges. First one is JJ Schools of Art, that is at VT. LS Raheja, that is in Bandra. Academic of Architecture, that is in Borivali. Bharatiya Vidyapit, that is in Navi Mumbai. Kamla Raheja, that is in Juhu. DY Patil, that is again in Navi Mumbai. Rizvi College of Architecture, that is in Bandra. IES, that is Indian Education Society, that is again in Bandra, just opposite to Lilavati Hospital. Then Bausaheb Hire College, this is my college where I have studied my architecture. This is in Bandra again. Balwantrao Seth, that is from Usha Pravin Gandhi, that is in Juhu again. School of Architecture, this is in Navi Mumbai. Lokmanya Tilak, again in Navi Mumbai. Aditya School of Architecture, it's in Borivali. Thakur, that is in Kandivali East. Then again this Seed College, that is in Mumbai. Then Mahatma Education Pillai College, that is in Navi Mumbai. Rachna Sansad, #1 college in Mumbai, that is in Prabha Devi, that is in Dadar. So these are the top 17 colleges what I insist my architecture students or all architecture students, they should really aim at getting all these colleges. Coming to this 17 colleges, the #1 college for architecture is Rachna Sansad, that is in Prabha Devi. #2 is JJ Schools of Art. #3 is Kamla Raheja. #4 is LS Raheja. #5 is IES. These are the 5 top colleges in Mumbai. What actually a good architecture student, if he wants to or she wants to practice with good quality of professors or high experienced professors, these are the colleges what they should aim at. But then at least not this top colleges, then this 17 colleges are the least thing what you have to select after your NATA, after your JMINs, and after your 12th exams. I'll say for JJ Schools of Art, that is #2 college in Mumbai, whereas in 12th you at least need 85%, and with NATA that will be more than 145 or 150 somewhere around. Coming to LS Raheja, that is #4 college, that needs at least 80% in 12th, and 140, 145 in NATA. The number academic of architecture, again I'll say the least no, the smallest cutout also with which is with architecture will at least the student should have 75% in their 12th, and at least 130 with NATA and JMNs. This is the basic level where the architecture students should pursue to get architecture colleges in Mumbai. Coming to Rachna Sansad, again that is #1 college, again 85% plus or 90 somewhere around, and 150, 155 in NATA. This is what they see. Aditya, Thakur, Lokmanya Tilak, Bausaheb Hire College, even they require somewhere 75, 80%, and 130, 135 marks in NATA and JMS. These are the basic cutouts what they have to really follow. Okay. Thank you very much, sir, for giving your valuable time and inputs. Thank you, parents, for being with us so patiently. मैं आशा करता हूं कि आप सबको हमारा ये वेबिनार पसंद आया होगा और आपको आर्किटेक्चर रिस्पेक्टेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, होपफुली वी कुड बी ऑफ एनी हेल्प टू ऑल ऑफ यू ऑल. पेरेंट्स, एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में प्लीज उसे आगे और आगे फैलाइएगा.
अरियन एकेडमी के नोटिफिकेशंस को टाइम टू टाइम जानने के लिए प्लीज आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं टू गेट ऑल अवर नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग ऑल फ्यूचर YouTube videos. Thank you, parents. Have a wonderful day ahead. Thank you.